Follow the Blues till now, we've seen some masti, some glamour, some bonding, glimpses of Team India's first couple of days in London, a sneak peek of Ashwin's mystery delivery, and of course Virat's intent. We want to win it, without losing a game or maybe drawing a game as well, if possible. The Fall of the Blues में आज आपको बता दूं कि आज इंटरव्यूज का दिन है. Look at this, ICC Digital. Look at this, Star Sports interviews. चाहे वो इंडिया के चैनल्स हों, चाहे वो इंग्लैंड के चैनल्स हों, आज सभी के इंटरव्यूज होने वाले हैं. आज पूरा डे है dedicated only for the interviews. Light, camera, action. अबे सांबा, आइए हमारे भैया में. इंडिया लेते फोन में क्वेश्चन किया करते वो और आदमी है. इससे पूछना फीफा इसने खेलना छोड़ा है नहीं छोड़ा. मैंने एक आइडल I was not getting trying. खुश ना तो खुश रूम के बाहर जा चले. ये 70 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता. ये 70 मिनट. Wait. What's going on? Wasn't this supposed to be an official photo shoot? Well, the photo shoot does happen. MS Dhoni, fresh off his shoot for the Tamil ad, seems a pro. With the helmet, without the helmet. Asking the cameraman for instructions and giving the required expressions. Don't smile, you're supposed to be menacing. Perfect take. Posing comes naturally to most of Team India's stars, and it's pretty much business as usual as interviews follow. It's been a good year with Tamil Nadu. I think the team has done really well. Until this man enters the room. You were supposed to remove it. Please give some credit to people. It's not his turn for the interview yet, so he has to wait. But it's hard to keep an excited young man down. First time in London, gonna enjoy this. जो देसी बंदी हैं बहुत पीछा कर रही हैं. करे कोई माइंड नहीं करना, मैं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's finally Hardik's turn to face the questions. Okay, let's roll, guys. But before he can even get warmed up, two Indian pace spearheads walk in. And they're as quick with the wit as they are with the ball. One thing fans don't know about Hardik Pandya. He's very bad at FIFA. He lost me 10 times in a row. That's इतने अच्छे बच्चे हैं हमारी टीम के सीक्रेट्स भी निकल गए PSR. And he quit playing FIFA because of that thing only. No, he's just saying, just saying. Please, एक चीज हार्दिक के बारे में जो फैंस को नहीं पता. लोगन देके जाता है. और अपने दाढ़ी. Hardik is a very sweet boy. दाढ़ी. He's also a selfie king. For one pic, he at least take 100 selfies. 100 selfies. I saw uploading selfies, bro. Come on. The boys aren't going to let anyone have the last word. इस रूम में रूम खाली चाहिए यार, मैं अकेले रूम में. आओ ठाकुर आओ. अबे सांबा, आइए हमारे भैया में. And no one is spared. 70s का मूवी कोई भी आप जैसे हिंट दो से यार, वो मूवी में ना वो डायलॉग था, तुरंत नाम बताएगा. फेवरेट डायलॉग कौन सा? फेवरेट डायलॉग. ये मजदूर का हाथ है काटिया. लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है. ये टेक 2 स्टार्ट. ये ताकत मैंने और पसीने से कमाई हुई है और तू चाहता है मैं तेरे यहाँ भोंकू, तेरे बोलने में चिल्लाऊं. कातिया, जिस दिन तू मुझे अकेला मिल गया ना, कसम तेरे बोटी करके कुत्तों खिलाऊंगा. Meanwhile, the producer still needs his questions answered. Okay. Do some beginning. But the trio is in no mood to oblige. They are not using the normal selfie. Yeah, they use Beauty Plus. They use Beauty Plus. This is how they get the better pictures in the phone and they're putting on the Beauty Plus. ये तुम्हारी खूबसूरत सेल्फी के लिए इस्तेमाल करें Beauty Plus. Pandya tries his best to bully his seniors. जो बंदे बोलते हैं, जो यूज करते हैं, तो सोच लो इधर होता है. सर कैमरा फोन चेक करो. ब्यूटी प्लस ऐप नहीं मिलेगी. लो सर प्लीज. ले दोनों खोल के, अगर उसमें कोई ऐप भी दिखे ना तो करो. वो होता क्या है इसमें, सिर्फ वो होता है जेलस फील होते हैं लोगों को. वो ये बस के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि जेलस फील होगा इससे. अपने भाई को इसे कहते हैं ब्रो कोड. चलती रहती चुटकुले इधर उधर चलते रहते हैं. समझ लो चुटकुले. Finally, it's Umesh's turn in the hot seat.
आप क्या कह रहे थे? तेरे मोमो के धागे तेरे उंगलियों से जा लिपटे. The last question to Umesh is about his love for Bollywood, and he expresses it with a King Khan dialogue. जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं. क्या? बाजीगर. We don't quite remember this dialogue like that. Let's listen to it again, in slow motion this time. जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं. क्या? बाजीगर. Umesh realizes that he's got it wrong and is keen to correct it. After all, the dialogue is KKR owner King Khan's. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. क्या? बाजीगर. The speedsters finish the laugh riot and make their way out. And just then, the king walks in. मामला ऐसा होशियार स्टार स्पोर्ट्स की इस महल में बहार रहे हैं the real Rajput boy जहां बना रविंद्र जडेजा. Hello guys, how are you everyone? Oh, that's a signature move now. Yes. Let's start the interview. Ravindra Jadeja is supposed to be the king of selfies. But apparently his throne is under threat these days. बहुत सारे हैं, अब तो मैं पीछे रह गया हूँ. नहीं बट अब आजकल शिखर धवन बहुत फ़ोटोज़ खींचता है, कहीं भी जाता है, अगर पंछी भी उड़ता है तो वो फ़ोटो खींच लेता है और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है. तो या शिखर धवन और अजिंक्य भी है, वो बिना बोले इतनी फ़ोटो खींच लेता है कि लोगों को पता नहीं चलता. He quickly wraps up the interview and then starts giving tips on how to take selfies. पहली बात तो ये कि अगर आप कहाँ पे सेल्फी ले रहे हो, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर जगह पे सेल्फी लेते हो तो उसका बैकग्राउंड आप ज़रूर देखते होंगे कि अच्छा बैकग्राउंड है और आगे पीछे सब कुछ चीज़ अच्छा है. तो एक तो एंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा एंगल सही होना चाहिए ताकि जो चेहरे का जो फ्रेम है वो मोटा ना दिखे. देखिए perfect from the selfie king himself. From the selfie king. That's all the time that he has, because Team India now needs to head for its second net session in England. It's serious business again as the team arrives at the Oval, one of the three venues for the Champions Trophy, where India faces Sri Lanka in the league match and plays its two warm-up matches. Remember, no Rohit or Yuvraj yet. Captain Fearless practices his shots in the V. A short 20-minute session with the bat and ball. Clearly, the support staff doesn't want to overexert players coming off the IPL. And then, fielding drills for 20 minutes. Getting used to the windy conditions in England will be important if India wants to hold on to all its catches in the deep. Wrapping up the relatively short net session, Team India calls it a day. इंडिया ओवर में पहुंच चुका हूं मैं इस समय और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी डिस्प्ले पे एक एक करके सब फोटो खिंचवा रहे हैं. लाइन लगी पड़ी है भाई साहब. तो फिर डिफेंड करने के लिए तैयार हैं हम इस ट्रॉफी को. पहले धोनी लेके आया था, दिस टाइम इट्स टाइम फॉर कोहली. गाइस, आर वी रेडी? तो क्या लग रहा है, ऐसे टच किया आपने ट्रॉफी को? टच करके कैसा लग रहा है? Touch नहीं किया, लेकिन I want to touch it, yeah. But I'm sure I'm gonna be arrested if I touch. Of course. But we'll take home definitely. We will take it home. It's coming. आ रही है, क्या? आ रही है. साथ ही ले आऊं, उठा लूं क्या? It's an early start on the 28th as it faces New Zealand in the warm-up match. Inside the ground, the current leader and his predecessor take centre stage in the team talk before start of the match. It may be a warm-up game in London, but support for Team India is such that a few stands are still full. India can't ask for more from the match. The speedsters bowl quick and take out 7 Kiwi batsmen. And Shami's got a wicket. Virat Kohli is delighted. Bhuvaneshwar Kumar hits the mark. The man who scores runs in plenty in ICC tournaments gets some time in the middle. Lovely shot. And the Bharat Army gets to watch the talismanic Indian captain walk out to the middle.
आपके और मेरे जैसे फैंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है भारत। आमिर! So tell me something, किस के लिए गाने बनाए जा रहे हैं? We sing for every single player. Whoever the player is that's playing representing in Team India, we will sing a song for them and we'll represent them whether we win, lose or draw. Much to the joy of Indian fans, Virat scores a 50. Reaches a well-made 50. He's a terrific one-day player. And entertains a really young fan of his. So I am with the youngest Indian fan जो इस समय इंडियन टीम के लिए cheer कर रहा है. I'm sure अगर हम Champions Trophy वापस लेके आएंगे तो इस बच्चे की वजह से लेके आएंगे. How old is he? 40 days. 40 days. Wow, and he is here for a match, for an international match. How cool is that? It's pretty cool. Yeah. The rain is just a little too heavy. English weather prevents Kohli from getting 100, but the fans are happy that they managed a glimpse of their captain Fearless. It's a great day at office for Team India, and the team is in high spirits afterwards, sharing their happiness with millions of fans across the world on social media.